गाइटन न्यूरोफिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 48 आज हम करेंगे। टॉपिक का नाम है सोमैटिक सेंसेशंस और ये उसका पहला कंपोनेंट है जो ये चैप्टर डील करेगा, विच इज अबाउट द जनरल ऑर्गेनाइजेशन टेक्टाइल एंड पोजीशन सेंसेस। सो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो सोमैटिक सेंसेस हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम, they include all the mechanisms that collect sensory information from all over the body. These senses are in contradiction to the special senses. So हम जो vision, hearing, smell, taste और equilibrium इनको particularly कहा जाता है special senses of the body, और इनको अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इन पे अलग अलग डेजिग्नेटेड चैप्टर्स हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है only the somatic senses other than all these senses. Okay, so we'll not be discussing vision, hearing, smell, taste and equilibrium, and the remaining of all the signals हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सोमैटिक सेंसेस होती क्या है, हाउ कैन वी क्लासीफाई सोमैटिक सेंसेस। इनको क्लासीफाई करने के भी बहरहाल 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। सो पहला तरीका ये है कि वी क्लासीफाई देम इनटू 3 मेजर टाइप्स, और वो 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1, मैकेनो रिसेप्टिव सोमैटिक सेंसेस। सो ऑब्वियसली इसमें मैकेनो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। द अदर कैटेगरी इज कॉल्ड थर्मो रिसेप्टिव, which detect heat and cold, यानी कि temperature. And then the next one is pain senses, which is activated by factors that damage the tissue. ये जो तीनों divisions हैं, that is based on what type of receptors are being activated and what are the stimuli. So for example, mechanoreceptors हैं, they include tactile senses as well as position senses. So vibration, position, ये सारी senses. Mechanical senses जो receptor receive करेंगे, these are called mechanoreceptive somatic senses. Temperature जो receptors feel करेंगे, they are called thermoreceptive senses. और पेन के लिए, so these are the 3 main categories. और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली मैकेनोरिसेप्टिव, टैक्टाइल एंड पोजीशन सेंसेस की बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोरिसेप्टिव और पेन रिसेप्टिव सेंसेस इन दिस चैप्टर। सो इन तीनों में से दिस इज द ओनली टॉपिक विच विल बी कवर्ड, विच इज द टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, और ये जो टैक्टाइल सेंसेस हैं, इसका मतलब बेसिकली अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। इट इंक्लूड टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिकल सेंस, यानी किसी के एयरलॉक को कभी आपने ऐसे किया है, टिकलिंग, या किसी के बेली बटन में, नाभि में, आई मीन टिकलिंग, यू नो, सो दैट टिकलिंग सेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ tactile senses. So we'll talk about tactile and position senses in this video. और position sense में दोनों तरह की senses involve हैं। मूवमेंट भी हम सेंस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी मूवमेंट की किस फेज में है, या हम रुके हुए हैं तो स्टैटिक पोजीशन। सो वी कैन एक्चुअली टेल कि हमारी बॉडी रुकी हुई है या मूव कर रही है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन आवर बॉडी इज इन। ओके, सो दैट इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग सोमैटिक सेंसेस। सो बेसिकली सोमैटिक सेंसेस में आपको बताया कि पूरी बॉडी से जो भी सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल नोन एज सोमैटिक सेंसेस। फिर एक स्पेशल सेंसेस की कैटेगरी है, वो अलग से है, जिसमें आईज इन्वॉल्व है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। ओके, और फिर जो सोमैटिक सेंसेस हैं उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। मैकेनो रिसेप्टिव, जिसमें टेक्टाइल और पोजीशन, और टेक्टाइल में ये सारी चीजें इन्वॉल्व है जो मैंने यहाँ भी आपको बताई, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन वगैरह। थर्मो रिसेप्टर एंड पेन की जो रिसेप्टर के सेंसेस हैं, दैट इज इन अ डिफरेंट चैप्टर। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द सोमैटिक सेंसेशन। ये जो भी हमने क्लासिफिकेशन की है 3 कैटेगरीज में, दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन हम किस स्टिमुलस और किस रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 1 एक्सटेरो रिसेप्टिव सेंसेशन। इसका मतलब यह है कि ये वो सेंसेशंस हैं जो बाहर से फील हो रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। Then there are proprioceptive sensations. They are those sensations which are related to physical state of the body, including position sensing, tendon, muscle sensation. ये तमाम sensation जिससे आपको body की position का idea होता है। So number 1 is exteroceptive, जो बाहर से feel होंगी, such as pain, such as temperature. So that's another way of classifying it. यहाँ हम क्लासीफाई कर रहे थे based on the stimulus and based on the receptors involved. यहाँ हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि अगर ये बंदा है और उसकी बॉडी पर बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है तो एक्सट्रोरिसेप्टिव, अगर पोजीशन को हम सेंस कर रहे हैं तो प्रोप्रियोसेप्टिव। एंड देन देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड विसरल सेंसेशन। Visceral, they arise from the viscera of the body, such as internal organs, GI tract के organs. So वो sensations, visceral sensations. And then there is 4th category. So exteroreceptive, proprioceptive, visceral, and deep sensation. They are those that come from the deep tissues.
इसमें इंक्लूडेड है फेशिया, मसल्स, बोन, देर ऑल डीप टिश्यूज. ओके, एंड इसमें अब तमाम सेंसेस इन्वॉल्व हैं. प्रेशर इन द डीप टिश्यूज, पेन इन द डीप टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल. नाउ ये था बेसिक आउटलुक के what we basically are going to discuss in this chapter. So we are going to talk about somatic sensations, which are sensations throughout the body जो receive होती हैं. sensory sensations, obviously different sensory sensations can be felt, और फिर इनकी classification, इनकी categorization. Mechanoreceptive are the ones which include tactile imposition, जो हम आज के वीडियो में करेंगे. Okay, so after you understand what type of sensations we are talking about, then we have to talk about detection and transmission of tactile sensations. देखिए आप, पूरी गेम ये है इस पूरे चैप्टर की और somatic sensations की. So suppose this is you, your beautiful body, and there is an external stimulus. अब ये stimulus यहाँ पर receive होगा. So here we have to have some receptors, और फिर ये रिसेप्टर से न्यूरॉन्स के जरिए ये मैसेज ऊपर हायर सेंटर्स तक जाएगा. सो देयर हैज टू बी अ रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड देन देयर हैज टू बी अ पाथवे. अब वो जो पाथवे है इस केस में इट विल बी असेंडिंग पाथवे. आपको याद है मैंने अपनी न्यूरो एनाटमी की स्नेल से वीडियोस करा रखी हैं और उसमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. वो यहाँ पर किसी हद तक रिवाइज होंगे बहुत ही क्विकली, बिकॉज असेंडिंग ट्रैक्स पे हमने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पर. न्यूरो एनाटमी की प्लेलिस्ट में मौजूद भी हैं. सो वो सारी वीडियोस हम यहाँ आज की एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट इस चैप्टर में दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि नंबर 1 देयर विल बी अ रिसेप्टर. तो आपको डिफरेंट तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स बताऊंगा, वो आपको पता होने चाहिए. एंड देन देयर आर असेंडिंग पाथवेज. सो वी नीड टू नो कि कौन कौन से असेंडिंग पाथवेज हैं जिससे वो सेंसेशंस ऊपर जाती हैं. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम. कुछ असेंडिंग ट्रैक्स ऐसे हैं जिससे पेन फाइबर्स असेंड होते हैं. ओनली द पेन इंफॉर्मेशन गोज टू द हायर सेंटर्स सच एज ब्रेन. कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनसे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन जाती है. देन वी हैव सम फाइबर्स जिनसे वाइब्रेशन, 2-point discrimination. सो वी हैव मल्टीपल पाथवेज. तो रिसेप्टर होंगे और असेंडिंग पाथवेज होंगे. सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी. ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है. यहां हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन की, और डिटेक्शन का मतलब ये है कि व्हाट आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट. So although touch, pressure, vibration, they are frequently classified as separate sensations. कौन कौन सी? Touch, किसी को छूना, हाथ पकड़ा, हाथ दबाया और फिर हाथ हिलाया. So touch, pressure and vibration. They are considered as different sources, different type of sensations. They are all detected in the same type of receptors. Or there are 3 principal differences amongst these. यानी कि जो सेंसेशंस हैं. टच सेंसेशन जनरली रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर्स इन द स्किन और इन द टिश्यूज इमीडिएटली बीनीथ द स्किन. जबकि जो प्रेशर सेंसेशन है दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम डिफॉर्मेशन ऑफ द डीपर टिश्यू. यानी डीपर टिश्यू में अगर कोई गड़बड़ होगी तो वहां डीपर टिश्यू में इस प्रेशर सेंसेशन को फील किया जाएगा. इवन अगर आपको हाथ को ऊपर से भी कोई दबा रहा है तो डैमेज एक्चुअली डीपर डैमेज है जो कि आप फील कर रहे हैं एज अ प्रेशर. एंड देन वाइब्रेशन की जो सेंसेशंस हैं दे रिजल्ट फ्रॉम रैपिडली रिपीटेटिव सेंसरी सिग्नल्स. यानी इफ दिस इज माई हैंड और मैं इस पकड़ के बार बार जोर से हिलाऊं, सो दिस इज अ रेपिटेड मूवमेंट विच विल बी परसीव्ड एज वाइब्रेशन. ओके, सो ये 3 चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टच सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो स्किन पर होते हैं यूजुअली. प्रेशर सेंसेशंस डीप टिश्यू के डैमेज से होती है और वाइब्रेशन इज बाय फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ समथिंग. अब हमको जो नेक्स्ट है 5-6 तरह के डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो पता होने चाहिए. वो क्या हैं? विच इज़ व्हाट वी कॉल द टैक्टाइल रिसेप्टर. और मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट टू रिसीव टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिकलिंग सेंस. इन तमाम सेंसेस को फील करने वाले रिसेप्टर्स को हम कहते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स. एंड देयर आर एटलीस्ट 6 कैटेगरीज. ज़्यादा हैं बट आपको एटलीस्ट 6 पता होनी चाहिए. द फर्स्ट वन, नंबर 1, is known as the free nerve ending. और जैसा कि नाम से जाहिर है, they are free nerve endings which are found everywhere in the skin and in many other tissues. They can detect touch and pressure. So remember this information. For example, even light contact with the cornea of the eye. आंख में अगर थोड़ा सा भी आप रुई लगाओ, मतलब रुई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि you are touching the eye because seeing the corneal reflex. तो और ये करते भी हैं एक्चुअली. इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ समबडी इज डेड और अलाइव, यू एक्चुअली टच द कॉर्निया टू सी द रिफ्लेक्स. सो इफ यू इवन स्लाइटली टच द कॉर्निया, देयर विल बी फ्री नर्व एंडिंग एक्टिवेटेड. Okay, so free nerve endings are present everywhere.
द सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर्स, सो अब हम सिर्फ रिसेप्टर्स की बात करेंगे। और फ्री नर्व एंडिंग्स कौन सी फीलिंग्स को रिसीव करती है? टच एंड प्रेशर को। जो सेकेंड कैटेगरी है, दे हैव ग्रेट सेंसिटिविटी, यानी दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, दे आर कॉल्ड मीजनर्स कैप्सूल्स। बिलीव मी, जब मैं खुद एमबीबीएस कर रहा था तो मुझे ये समझने में बड़ा मुश्किल होती थी कि मीजनर कैप्सूल क्या है, फ्री नर्व एंडिंग क्या है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं होगी तो समझने में मुश्किल होगी। जैसे इस चैप्टर का हमने कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट दैट हम सेंसेशंस की बात कर रहे हैं, और सेंसेशंस के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ रिसेप्टर जो किसी भी सेंस को फील करेगा, एंड देन वी नीड अ ट्रैक्ट जो उस इंफॉर्मेशन को ऊपर हायर सेंटर्स पे लेके जाएगा। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेप्टर्स, फ्री नर्व एंडिंग्स, नाउ मीजनर कैप्सूल्स. Now these Meissner capsules are more sensitive than free nerve endings. They have an elongated capsulated nerve ending of a large myelinated sensitive fiber. Inside the capsulation, they are capsulated, by the way. There are many branching terminal nerve filaments. These capsules are present in the non-hairy parts of the skin. So listen to this, non-hairy parts of the skin. And कौन-कौन से होते हैं non-hairy parts of the skin? For example, lips. For example, fingertips. For example, other parts of the body जहाँ पे hairs नहीं है. Glans penis, for example. Now, Meissner's capsules adapt in a fraction of a second after they are stimulated, which means they are particularly sensitive to the movement of the object over the surface, which also means that they are highly, highly sensitive. Okay? The third category is, so सारी information जो मैंने आपको बताई, they are all very important. You must know what are free nerve endings, कहाँ होती हैं, किस तरह की feelings को receive करती हैं, what are Meissner's capsules, कहाँ होते हैं, कौन सी feelings को receive करते हैं. The third category, the fingertips and other areas that contain large number of Meissner capsules usually also contain, यानी जो hairless parts आपकी body के हैं वहाँ Meissner capsule तो होता ही है, साथ साथ they also have other tactile receptors called the Merkel's disc. The hairy parts of the skin also contain Merkel discs, so ये सिर्फ non-hairy parts पे नहीं होता है. Non-hairy parts पर Meissner capsule होता है लेकिन hairy parts पे नहीं होता. So remember कौन सी चीज़ किधर है, okay? These receptors differ from Meissner's capsule in that they transmit an initially strong but partially adapting signal and then continuing weaker signals that adapt only slowly. So इनका mechanism of action different है because इनका structure different है. अभी देखते हैं diagram में थोड़ी देर में. Therefore they are responsible for giving out steady state signals that allow one to determine continuous touch of objects against their skin. So they send out steady state signals, long term feeling को महसूस करते हैं. So जो Meissner's capsule है, अगर मेरे हाथ पर कोई हाथ रख के हाथ को फेर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, so I will start feeling कि हाथ कहाँ move कर रहा है. All this will be quickly changing information और ये Meissner's capsule के जरिए मेरी बॉडी में फीड हो रही है. लेकिन मुझे एक जो ओवरऑल फील होगा कि मेरे पूरे हाथ पर किसी ने हाथ रखा हुआ है, वो स्टेडी स्टेट लॉन्ग टर्म permanent signal is usually by the this particular type of receptor called the Merkel disc. So अब तक तीन तरह के मैंने आपको receptors बताएं. Number 1 free nerve endings, number 2 Meissner's capsules and number 3 Merkel disc. इन सब की अपनी अपनी specific location है, अपने अपने specific काम है. So if you look at this diagram, this is a section through skin and you see towards the skin there are free nerve endings. So ये बस free nerve endings हैं, but sometimes these free nerve endings, ये free nerve endings हैं, all these, you see here there is a capsulated free nerve ending type of thing which is getting into a large myelinated fiber. So this is called Meissner's capsule. And then we have a different structure, free nerve endings type का structure है, और हर nerve ending के इर्द गिर्द एक disc like structure है. यहाँ पे combined capsule था, यहाँ पे हर nerve ending के इर्द गिर्द एक disc like structure है. It is also feeding into large myelinated fiber. That's called Merkel disc. Usually जहाँ जहाँ Meissner capsule होता है वहीं वहीं Merkel disc होता है, होना भी चाहिए, दोनों M से शुरू होते हैं. Okay? तो ये तीन तरह के categories of receptors मैंने आपको बताया. Right? Merkel discs are often grouped together in a receptor called the touch domes, which project upward against the underside of the skin epithelium. So this is what is known as the touch dome. Okay? The detail is not important. Next category, जो fourth category है receptors की, slight movement of any hair on the body stimulates a nerve fiber in twining its base. जरा सी hair की movement होगी and there is a specific nerve fiber to catch it. और वो जो nerve fiber है, they are called hair end organs. So this is, for example, is a hair shaft,
And at the base of the hair, these are the hair end organs. So movement of the hair here and there will be felt by the hair end organs. ये भी receptors हैं. A receptor adapts readily and like Meissner's capsule detect mainly the following: movement of an object on the surface of the body. अगर skin पे कोई चीज move कर रही है, कोई कीड़ा छोटा सा, और initial contact with the body. So that will be उससे बाल move करेंगे, and these receptors will pick it up. पांचवी जो कैटेगरी है रिसेप्टर्स की, दैट इज लोकेटेड डीपर इन द सेल लेयर्स ऑफ स्किन, एंड दिस इज नोन एज Ruffini's एंडिंग. सो Ruffini's एंडिंग, यू सी दिस इज प्रेजेंट डीप. सो ये फ्री नर्व एंडिंग्स बिल्कुल ऊपर ऊपर है. मीजनर कैप्सूल है, एंड देन वी हैव दीज मकल्स डिस्क. दिस इज अनदर मीजनर कैप्सूल, एंड हियर टुवर्ड्स द डीपर एरिया, दिस इज सुपरफिशियल एरिया, दिस इज द डीप एरिया. इन द डीप एरिया वी हैव द Ruffini एंडिंग. और ये जो Ruffini एंडिंग्स हैं, they adapt very slowly, therefore they are very important for signaling continuous state of deformation of the tissue, such as heavy prolonged touch. बहुत देर तक किसी ने हाथ रखा, और pressure signals. They, और भी मेरे examples दिमाग में आ रही हैं, but I'm not going to share them at this forum, but I hope you get the idea. So prolonged touch and some pressure. They are also found in joint capsules. So see, these same are also present in joint capsules. So rotation of the joint is sensed by these receptors. And the sixth category of receptor is called the Pacinian capsule. They are also present deeper. So Pacinian capsules are also present in the deeper structures. They are stimulated only by rapid local compression of the tissue because they adapt in a few hundredths of a second. Therefore, they are particularly important for detecting tissue vibration or other rapid changes in the mechanical state of the tissue. So they're deeper, any changes in the deep states of the tissue. तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं आपको रिसीव करने के लिए. आपको रिसीव करने के लिए मतलब फीलिंग्स को रिसीव करने के लिए. फीलिंग्स बोले तो टेम्परेचर, टच, पेन, ये तमाम प्रेशर, ये तमाम फीलिंग्स हैं. उन फीलिंग्स को रिसीव करने के लिए 6 तरह के रिसेप्टर्स नेचर ने आपको दिए हैं. Okay, almost all specialized sensory receptors such as they are very specialized, okay, such as Meissner capsules, the dome receptors, the hair receptor, Pacinian capsule, Ruffini's ending, they transmit their signals in type A beta nerve fibers that have transmission velocities very high, 30 to 70 meters per second. जबकि जो free nerve endings हैं उनकी transmission velocity थोड़ी सी कम है, 5 to 30 meter per second. Some tactile free nerve endings transmit via type C unmyelinated fibers as well, which is very, very slow, 2 meters per second. Thus, the more critical type of sensory signal, those that help to determine precise location on the skin, minute gradations of intensity or rapid changes in the sensory signal intensity are all transmitted in more rapidly conducting type of sensory nerve fibers, यानी कि bigger myelinated fibers, more speed. Conversely, cruder type of signals such as pressure, poorly localized touch, and especially tickle are transmitted via much slower fibers. Okay, so that's the distinction. Depending upon आपको कितना sharp feeling चाहिए उस pain का या उस stimulus का, उस तरह nature ने design किया है पूरा system. Now, how do you detect vibration and how do you detect a few other sensations is the next topic of discussion. All tactile receptors are involved in detection of vibration. So all of them which we just named. Although different receptors detect different frequencies of vibration. For example, Pacinian capsules, 30 to 800 cycles can be detected, and there are listed for each and every one. You don't have to remember the frequencies, but just have an idea that all of them are capable of receiving vibratory signals, okay? How is the tickle and itch received by the mechanical receptor? This basically happens by the free nerve endings. And neurophysiological studies have actually demonstrated the existence of very sensitive, rapidly adaptive mechanoreceptor free nerve endings that elicit only the tickle and itch sensation. Kharish ho rahi hai, tickling sensation. So free nerve endings is performing this job. The purpose of itch sensation is presumably to call attention to mild surface stimuli such as flea crawling on the skin or a fly about to bite. So basically, जो itch या tickling sensation है, it is more information towards a very near future happening. So for example, अगर skin पर कोई tick या fly move कर रहा है, so maybe it will bite you. So अगर ये movement feel नहीं होगी तो bite आराम से हो जाएगा. ये tickling और ये itching feel होगी movement वाली तो फौरन आप यहाँ खो जाएंगे, खारिश करेंगे और इससे वो tick या flea या जो भी है वो हट जाएगा और bite का जो incidence है वो कम हो जाएगा. So it's actually a good thing for you, है ना?
The next heading that we have to discuss, so these were all the receptors. So we have been talking about what is the somatic sense. Somatic sense की classification क्या, categorization क्या है. Then receptors जो 6 तरह के हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या काम करते हैं. So now we have to talk about what are the pathways. मैंने आपको कहा ना कि if this is the beautiful you have some receptors and then you need some pathways. So receptors 6 तरह के हैं. पाथवेज कौन कौन से हैं आइए डिस्कस करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोमैटिक सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी enter the spinal cord through the dorsal root of the spinal nerve. So that's the common area जहाँ से सारी information body में enter हो रही है towards the higher center. It's the dorsal root of the spinal nerve. आपको पता है ना spinal nerve के 2 roots होते हैं. There is a dorsal root and then there is a ventral root. तो dorsal root से ये information enter होती है into the spinal cord. However, from the entry point into the cord and then to the brain, the sensory signals are carried through one of the 2 alternate pathways. का मतलब ये है कि there are 2 different pathways which carry all these sensory information. पहला pathway है the dorsal column medial lemniscus system. कुछ याद आया? हमने न्यूरोएनाटमी में इस पे ऑलरेडी वीडियो की हुई है. और दूसरा pathway है anterolateral system. These 2 systems come back together partially at the level of the thalamus. So, information from any part of the body, say for example आपको foot level पर कोई stimulus feel होता है. So we have receptors there. वो receptors neuron से in the spinal cord from the dorsal root of the spinal cord and the message will go up to the higher centers. 2 pathways के जरिए ये मैसेज जा सकता है. एक pathway है dorsal column medial lemniscus system और दूसरा pathway है anterolateral system. अब जो dorsal column medial lemniscal system है, as the name implies, it carries signals upward to the medulla of the brain, mainly in the dorsal columns of the spinal cord. Because इसका नाम ही है ना, देखिए dorsal column. Then after the signals synapse and cross to the opposite side of the body in the medulla, they continue upward through the brainstem to the thalamus via the medial lemniscus. यानी अगर मैं ये spinal cord ड्रॉ कर रहा हूँ, so spinal cord में ये information ऊपर जा रही है via the dorsal column और उसके बाद higher centers में एक जगह पे आके it crosses to the opposite side and then it reaches to the thalamus. और ये जो आगे की higher centers की forward journey है, that is known as the medial lemniscus. इसीलिए इस पूरे pathway का नाम है dorsal column, spinal cord में dorsal position पर है and medial lemniscus because after these fibers cross to the opposite side, they reach the thalamus via medial lemniscus. So combined together, it is called dorsal column medial lemniscus system. Conversely, signals in the anterolateral system. So एक pathway था dorsal column medial lemniscus pathway, दूसरा था anterolateral pathway. ये जो pathway है anterolateral system, immediately after entering the spinal cord, it crosses to the opposite side. ये फॉरन ऑपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाता है एंड देन इट असेंड. सो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगा एंड देन इट गोज अपवर्ड. और कहां? इट गोज अपवर्ड फ्रॉम द एंटीरियर एंड द लेटरल पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द डॉर्सल पार्ट बिकॉज द डॉर्सल पार्ट was covered with this particular type of tract. And all these anterolateral fibers, they terminate in the brainstem and thalamus. The dorsal column medial lemniscus system is composed of large myelinated nerve fibers, important information guys, that transmit signals to the brain at the velocity of 30 to 110 meters per second, whereas the anterolateral system is very, very slower, around only 40 meters per second. You see the differences in the speed. Another difference between the two system बोले तो dorsal column medial lemniscus system and anterolateral system, okay? Another difference between these two is that the dorsal column medial lemniscus system has a high degree of spatial orientation of the nerve fibers with respect to their origin, whereas the anterolateral system is much less spatial. मतलब जो discrimination है कि पेन के fiber body के किस part से आ रहे हैं, so that distinction is known as the spatial orientation. It is more so in the dorsal column medial lemniscus system. These differences immediately characterize the type of sensory information that can be transmitted by the two systems. That is, sensory information that must be transmitted rapidly with temporal and spatial fidelity. यानी rapid पहुंचाना है और fine details के साथ पहुंचाना है. So dorsal column medial lemniscus is the way. That which does not need to be transmitted rapidly or great spatial fidelity is transmitted by the end. और बाकी जो बच गई वो इस तरह से जाएंगी, ठीक है? The anterolateral system is a special capacity that the dorsal system does not have. और वो क्या है? वो special capability क्या है? The ability to transmit broad spectrum of sensory modalities such as pain, warmth, cold, crude, tactile. Most of these are going to be discussed in chapter 49.
the dorsal system is limited to discrete type of receptors. ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए दो जो ट्रैक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया गेम्स आ रहा है इस चैप्टर का भाई यही है कि देयर आर रिसेप्टर्स which receive the signal and then there are tracts. Tracts दो तरह के हैं. एक है medial dorsal column medial limniscus system जिसमें बड़े फाइबर्स हैं, फाइन डिटेल्स वाली चीज़ें मूव कर रही हैं, और एक एंटेरोलेटरल सिस्टम है जो मोर और लेस जहाँ फाइन डिटेल्स नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है. सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आपको ये समझ में आएगा कि डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्निस्कस सिस्टम वेरी हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन. एग्जैक्टली आपको पता होगा कि मेरे पाँव पे पिन चुभ रही है, दैट इज डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्निस्कस से इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है. टच सेंसेशन रिक्वायरिंग ट्रांसमिशन ऑफ फाइन ग्रेड इंटेंसिटी, वाइब्रेटरी सेंसेशंस, एनी सिग्नल मूवमेंट ऑन द स्किन पे कोई पिन मूव कर रही है, जॉइंट्स से पोजीशन की इंफॉर्मेशन, प्रेशर सेंसेशन रिलेटेड टू द फाइन डिग्री, जहां फाइन इंफॉर्मेशन मूव करेगी, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्निस्कस सिस्टम. जबकि जो एंटेरोलेटरल सिस्टम है उसमें पेन, थर्मल सेंसेशन, क्रूड टच, फाइन डिटेल्स नहीं पता. मोटा मोटा ये मुझे पता है कि मेरे हाथ पे कहीं कुछ लग रहा है, एग्जैक्टली कहाँ लग रहा है आई डोंट नो. सेक्सुअल सेंसेशंस आर ऑल्सो, दे आर ग्रॉस सेंसेशंस, दे आर वेरी वेरी ग्रॉस सेंसेशंस. दे ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम द एंटेरोलेटरल columns. Okay, so this is very important distinction कि कौन से कॉलम से कौन सी इंफॉर्मेशन मूव करेगी. अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ लिखी हुई है बास पैराग्राफ्स में, सो आई लेट यू नो कौन सी स्किप करनी है और कौन सी कंटिन्यू करनी है, बिकॉज यू नीड टू नो कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है. सब कुछ पढ़ने बैठे समझने बैठे तो काम हो जाएगा इसी में. But we have some important, pieces of information in between, so I'll highlight them. So let us now talk about the anatomy of the dorsal column medial limniscus system. Although this is the topic of neuroanatomy, already covered from spinal neuroanatomy, but let's go through this. So upon entering the spinal cord through the spinal nerve dorsal roots, because this is the point of entry for all the sensory information, the large myelinated fibers from the specialized mechanoreceptors, जो अभी हमने ऊपर सारे receptors discuss किए थे, they usually immediately divide to form a medial branch and a lateral branch, and they are also explained in the diagram. So if we look at this figure, for example, this particular diagram, so here you see this is a cross section through the spinal cord, and this is the spinal nerve. So as soon as all the information is getting into the spinal cord by the dorsal spinal nerve, they are, some of the fibers you can see are crossing to the opposite side, some of the fibers are not and they are on the same side. So this is the point that we are at the moment discussing, the dorsal column. So that is the dorsal column where all the information is going to ultimately come from these particular receptors, and it will go up to the higher centers, which is the brain and spinal cord. This is another depiction of which is much more clearer, by the way, to me, because what's shown here is this is the foot and this is the hand, and then somebody is beautifully touching a feather on the finger and the foot. So the sensory information यहाँ obviously receptors होंगे, और receptors के जरिए वो information dorsal root ganglion, and then it enters into the dorsal column. This is the dorsal area, the dorsal column, and in the dorsal column it ascends and ascends and ascends until it reaches the medulla, where the fibers then cross to the opposite side and then goes again towards the higher center, reaching thalamus, and from the thalamus they go to the higher centers of the cortex. So this is how the dorsal column and the medial limniscus pathway basically work. It ascends initially on the same side, and this is the same example given for hand. So यहाँ hand पर receptors होंगे, and these receptors take the information, gets into the spinal cord dorsal column, and then it crosses to the opposite side, usually at the level of the medulla, and then it goes to the higher centers. Okay, so that is the general organization and general structure for this particular column, जिसको हम नाम दे रहे हैं dorsal column medial limniscus pathway. Okay, the lateral branch and these details are not important. This blue box is actually very important.
कि note in 48.3 जो हमने diagram देखी, the nerve fibers entering the dorsal columns pass uninterrupted up the dorsal medulla, where they synapse in the dorsal column nuclei. From here, the second order neurons, and then the medial lemniscus to the thalamus, and then ultimately they go to the higher centers in the brain. So ये जो पूरी diagram है, इसमें obviously ये जो पहला neuron है, that's the first order neuron. Then there is a second order neuron which goes to the thalamus, और thalamus में relay के बाद the information is then transmitted to the cerebral cortex. Okay. अच्छा, thalamus में the medial lemniscus fiber terminate in the thalamic sensory relay area called the what ये सब हमने discuss किया हुआ when we talked about the ascending tracts. Okay. But general organization is very important to remember. These fibers of the dorsal column medial lemniscus pathway, they don't cross at the level of the spinal cord. हम अगला pathway जब देखेंगे anterolateral, it crosses the spinal cord right upon entry. So this is very, very important point to remember. There is a difference between the two. Okay. A spatial orientation of the nerve fibers in the dorsal column medial lemniscus pathway. One of the distinguishing feature of this particular pathway is a distinct spatial orientation of nerve fibers from individual parts of the body that is maintained throughout the tract. For example, अब ये जरा गौर से सुने because ये important भी है और अक्सर लोग इसको मुश्किल भी समझते हैं. The column spinal cord में what happens कि the fibers from the lower parts of the body lie towards the center of the cord. So for example, if this is the spinal cord, center of the spinal cord has the fibers from the lower parts of the body. Okay, whereas those enter the cord at progressively higher segments are entered towards the lateral side. So that is the spatial arrangement. In the thalamus, distinct spatial orientation is still maintained, with the tail end of the body, यानी कि lower part of the body, represented by the most lateral portion of the venterobasal complex, and the head and face represented by the medial area. So वहाँ जाके ये shift हो गई है configuration, but still this pathway is able to discriminate between different parts of the body, and this is what we call a spatial arrangement. Okay, now that's a very important heading. Somatosensory cortex. हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि higher centers तक information जाती है. तो वो higher centers में actually कहाँ जाती है? It goes to the somatosensory cortex area. It's a very, very important area. So if you look at the diagram here, this one, in fact, there was a better diagram here. So here you see, this is the somatosensory area. ये जो primary motor cortex area है, उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ. There is a somatosensory area 1 और फिर उसके नीचे there is somatosensory area 2. So these two areas are largely designated for receiving the signals. And you know that human cerebral cortex जो है is divided into about 50 distinct areas called the Brodmann areas based on the histological features. This map is important because virtually all the neurophysiologists and the neurologists use it to refer to many others, because there is an area for vision, there is an area for hearing, there is an area for everything. So these are called the Brodmann areas. You know, there is a large central fissure in the structure of the brain that extends horizontally across the brain. In general, sensory signals from all modalities of the body, कहीं से भी आ रहे हों, the sensation terminate in the cerebral cortex immediately posterior to the central fissure, जो मैंने भी आपको जगह दिखाई, जिनको हमने somatosensory areas नाम दिया था. Generally, the anterior half of the parietal lobe is concerned almost entirely with the reception and interpretation of the somatosensory signals, but the posterior half of the parietal lobe provide still higher levels of interpretation. It's very important कि जो भी information हमारे brain तक जा रही है उसको हमें interpret भी तो करना है ना. So visual signals terminate in the occipital lobe and auditory in the temporal lobe. Conversely, the proportion of the cerebral cortex anterior to the central fissure and constituting the posterior half of the frontal lobe is called the motor cortex. So we have a designated motor cortex. We have a designated sensory cortex. So this is the primary motor cortex area, central fissure, and these two are the somatosensory areas. They are designated as somatosensory area 1 and 2. Okay, there are two separate areas, and they are in the anterior parietal lobe. The reason for this division into two areas is that a distinct and separate spatial orientation of different parts of the body is found in each of the two areas. However, somatosensory area 1 is so much more extensive and so much more important than somatosensory area 2 that in popular usage, the term somatosensory cortex almost always refer to one. So remember these areas, that this is leg, arm and face, somatosensory area 2, but most of the body, you know, finger, tongue, intra-abdominal, so many important areas
in somatosensory area 1. तो अक्सर लोग इसी को बोल रहे होते हैं somatosensory area, but there are actually 2 areas, okay? जो somatosensory area 1 है in the parietal lobe, it has higher degree of localization of different parts of the body, और जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी. So remember the areas for 1 and areas for 2. कौन-कौन से बॉडी के एरिया को वो represent करते हैं. It's an important information, okay? Spatial orientation of signals from different parts of the body in the somatosensory area 1. Somatosensory area 1 lies immediately behind the central fissure. ये बात हम कर चुके हैं. And in fact मैंने आपको बता भी दिया कि वहाँ कौन-कौन से बॉडी के पार्ट्स को हम actually और किस ऑर्डर में. So thighs for example high up, then thorax and neck and shoulder. So this is the spatial arrangement which you have to remember. यही सब यहाँ लिखा हुआ है, okay? Now layers of somatosensory cortex and their function. Cerebral cortex in general मैं histology आपको करा भी चुका हूँ. So you know कि जो cerebral cortex है उसकी there are 6 different layers, और वो जो 6 different layers है obviously we are not going to discuss in detail right now कि वो 6 layers कौन सी हैं, but इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस पे अलग से वीडियो है मेरी histology की in the beginning से, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये सारे layers का concept हो. So we have in detail discuss कि इसमें molecular layer होती है, there is an external granular layer, then there is layer of a small pyramidal cell. So this is not the topic right now, so I'm going to skip this for now. Now the sensory cortex area is organized in vertical columns of neurons. Obviously पूरा जो brain का area है, जो जिसको हम somatosensory area 1 and 2 कह रहे हैं, it is made up of neurons, Functionally, the neurons of the somatosensory cortex are arranged in vertical columns extending all the way through 6 layers of the cortex. This is not important information. यहाँ पे काफी सारे numbers और speeds और ये सब just not important, so just skip this section. Now function क्या है somatosensory area 1 का? Obviously to receive sensations. किन जगहों से? वो जगहें भी मैंने आपको दिखा दी हैं इस डायग्राम में. So somatosensory area 1 के localities ये हैं और 2 की localities ये हैं. Okay. Now the incoming sensory signal excites neuronal layer 4 first. This is never asked in exam, so don't worry about these informations, okay? Functions is important, yes. Widespread bilateral excision of somatosensory area. So it is obviously done in experimental animals कि अगर ये पूरा somatosensory area 1 निकाल दें तो क्या होता है? Then the person is unable, ये तो ऐसे लग रहा है किसी इंसान में निकाला. The person is unable to localize discretely different sensations in different parts of the body. So this is very important for discrete information. The person is unable to judge critical degrees of pressure, unable to judge weights of the object, so unable to judge the shapes or forms of the object, a position known as stereognosis. Again, stereognosis. The person is unable to judge texture of the material, कि silky है या rough texture है, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम जो important informations हैं, they are all associated with somatosensory area 1, क्योंकि अगर उसको निकाल दें तो ये सब affect होते हैं. Note that in the list nothing has been said about the loss of pain and temperature sensation, because ये somatosensory area 1 का properly काम ही नहीं है, okay? या किसी और area की भी इसमें involvement है. Now ये एक बहुत important heading है, somatosensory association areas. देखें, बात ये है कि हमारा जो brain है ना, it works in a very very complex fashion. So brain ये पूरा है, उसमें एक somatosensory area है, लेकिन ये सिर्फ अकेला sensation को feel नहीं करता. There are associated areas जो इसके आसपास हैं, और वो associated areas help करते हैं signals को receive करके interpret करने में. So Broadband area 5 and 7 for example, they are also located in the parietal lobe, parietal cortex में है. They are very close to the somatosensory area 1. They play important role in deciphering deeper meanings of the sensory information. So they are important. Therefore, they are called somatosensory association area. So if you look at the diagram, let me take you back to the diagram. So this is somewhere here, somatosensory area 1 ये रहा, 2 ये रहा, and Broadband area 5 and 7 are somewhere here. So they are in close association. So whatever sensation is coming here is then coordinated with these areas to make deeper understanding of sensation है क्या, pain है तो किस तरह का pain है. So to make deep information and interpretation, these areas are very important. Okay. So electrical stimulation in the somatosensory association areas can occasionally cause an awake person to experience a complex body. So this is not something which is important. Again मैं आपको बता रहा हूँ कौन से points important है, कौन से नहीं. Okay. Amorphosynthesis, दिखने में ऐसा लग रहा है photosynthesis,
effect of removing the somatosensory association area. So अगर somatosensory association area हटा दिया जाए, जो कि area Broca's 5 and 7 थे, when these association areas are removed in one side of the brain, the person loses the ability to recognize complex objects. So there you go. It means they're important for interpreting complex information. Therefore, a person also often forgets to use the other side of the motor function as well. Likewise, when feeling objects, the person tends to recognize only one side of the object and forgets the other side, even exist or not. So, जो complex sensory information है, the three-dimensional sensory information, वो lose हो जाती है if the somatosensory association areas are not working, and that condition is called amorphosynthesis. Okay, then characteristics of dorsal column medial lemniscal signal transmission analysis. Now we have basic neuronal circuits in the dorsal column medial lemniscal system, और वो न्यूरल सर्किट्स वैसे ही हैं जो किसी भी असेंडिंग ट्रैक में होते हैं. देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देयर इज अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, देयर इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. एंड ये हम तमाम डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, दिस पर्टिकुलर डायग्राम. इसमें हमने बात की थी कि द इंफॉर्मेशन कमिंग इन गोज अप इन द डॉर्सल कॉलम एट द लेवल ऑफ द मेड्यूला, इट क्रॉसेस टू द अपोजिट साइड एंड देन इट गोज टू द लेवल ऑफ थैलेमस, एंड फ्रॉम थैलेमस इट गोज टू द हायर सेंटर, सोमैटोसेंसरी एरिया तक चला जाएगा ये. ओके, नाउ कौन कौन सी सेंसेशंस हैं जो इस पूरे पाथवे में जा रही होती हैं, हमने अब ये बात कई दफा कर ली है, बट लेट अस क्विकली रीकैप so that we wrap up the topic. Where were we? क्यों मुझे वो पेज नहीं मिल रहा? Yeah, there. So 2-point discrimination, method frequently used to test tactile 2-point discrimination is like आप, ये मेरा अगर हाथ है, अजीब सा मैं हाथ बना रहा हूँ, तो यहाँ एक पिन लगाएं, यहाँ एक पिन लगाएं. So if I am able to tell you 2 different points, then my 2-point discrimination is working very nicely. Okay, अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, डिफरेंट बॉडी की जगहों पे अलग अलग 2-point discrimination capacity होती है. So for example, on the tips of a finger, a person can normally distinguish 2 separate points even when the needles are very close, such as 1 to 2 millimeter. यानी मेरी फिंगर है, आप एक नीडल इधर रखें, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक नीडल इधर रखें, and I still should be able to tell कि these are 2 needles. लेकिन सिमिलर डिस्टेंस पे अगर मेरी बैक पे रखेंगे आप 2 needles, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 2 needles हैं. So in order for them to be identified at the back, they have to be at least 30 to 70 millimeters apart from each other. So we have different capacities in different areas of our body for 2-point discrimination. Okay. Now, effect of lateral inhibition to increase the degree of contrast perceived by the, so non-important, never asked in exam. So don't worry about it. Okay. Don't worry about these headings. You don't have to waste time reading this stuff, which is never asked in the examination. So the main concepts I have been taking you through. Okay. Then the position sense. The position sense are frequently so-called the proprioceptive senses, and they can be divided into static position sense and dynamic, where we are moving. So position sensory receptors, knowledge of position, either static or dynamic, depends on knowing the degrees of angulation of all the joints in all the planes and their rate. So obviously there are receptors placed deep down in the body, in joints for example, near the tendons for example, which tell us कि हमारी body की position क्या है. Therefore multiple different types of receptors help to determine joint angulation and are used together to make a sense out of position. So very complex phenomena, we actually don't know ये कैसे होता है. इसी तरह हमारे different parts of the body की position को judge करने के लिए हमारे muscle spindles, they also send sensory information. Okay, and then processing of the position sense information in the dorsal column medial lemniscus pathway. Basically, one sees that thalamic neurons responding to joint rotation are of 2 categories. Those maximally stimulated when the joint is in full rotation. So basically, it's all happening in the thalamus. That's the point that you have to remember. बहुत ज़्यादा details हमें पता भी नहीं है actually, और आपको to be honest एग्जाम के लिए याद भी नहीं रखनी. So इस पूरे चैप्टर का जो मेजर जिस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन. आपको 6 तरह के रिसेप्टर्स पता होने चाहिए, पाथवेज 2 तरह के पता होने चाहिए, डॉर्सल कॉलम मीडियल लिम्बस. आई एक्चुअली स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप मेरी असेंडिंग ट्रैक्ट्स की वीडियोस ज़रूर देखिए, बिकॉज वहाँ बहुत सारी एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको हेल्प करेगी. ओके, so now we have to talk about another pathway जो sensory information को higher centers पे लेके जाता है, and that pathway is known as
एंटेरोलेटरल पाथवे, चलें इसकी बात करते हैं। अब जो एंटेरोलेटरल पाथवे है उसके जनरल कैरेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए थे। ये क्रूड इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, स्लो स्पीड से जाता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, एंड दे सिग्नल्स अप द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इफ यू लुक एट द डायग्राम अगेन देयर इज अ फुट, देयर इज अ फिंगर, और यहाँ आग लगाई हुई है, there is a flame, so temperature feeling goes into the spinal cord, and as soon as it enters into the spinal cord via the dorsal root of the spinal nerve, it immediately crosses to the opposite side, and then it goes up and up and up, going through the medulla and going through the pons and going to the mesencephalon and then relay in the thalamus, and from the thalamus information obviously goes to the somatosensory area. सही है। इसी तरह अगर फिंगर से भी information जा रही है, so it goes first to the opposite side and then it goes up and up and up, relay in the thalamus and then go to the different parts of cortex. So the anterolateral pathway for transmitting sensory signals up the spinal cord and into the brain, in contrast to the dorsal column pathway, the transmittory signals that do not require high discrete localization. ये मैं differences तो start में आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो pathway है, that is not taking care of fine details. It is actually taking up crude signals. Okay, these type of signals include pain signals, heat, cold, crude, tactile, tickle, sexual sensations. All of these sensations travel through the anterolateral pathway. उसकी anatomy क्या है? The spinal cord anterolateral fiber originate mainly in the dorsal horn lamina. These lamina are where many of the dorsal root sensory nerve fibers terminate for entering the spinal cord, and they cross to the opposite sides, and then they ascend via the anterior spinothalamic and the lateral spinothalamic tracts. So again, मेरी videos, detailed videos मौजूद हैं anterior spinothalamic. So what you need to understand is what are first order neurons, what are second order neurons, what are third order neurons for these pathways. So please go watch my neuroanatomy videos जिसमें हमने ascending tract किए हुए हैं. Okay, now the upper terminus of the two spinothalamic tracts is mainly twofold. Number one, throughout the reticular nuclei of the brainstem, and number two is the in two different nuclear complexes of thalamus, the ventrobasilar complex and the intralamus. So this is all the fiber distribution at the higher centers of the brain. Okay, obviously it's not covered very well here. It's actually very well covered in my videos on the ascending tracts. Okay, now characteristics of transmission in the anterolateral pathway. In general, same principles apply to the transmission in the anterolateral pathway as they apply in the dorsal column medial lemniscus pathway, except for the following differences. So listen to the differences. और ये differences काफी सारे हम already कर भी चुके हैं कि the velocities of transmission are only a third to half to those of the dorsal columns. यानी इसमें slow speed से information move करती है. Then the degree of spatial localization is poor. यानी fine details, 2-point discriminations, body के different parts से information आ रही है, ये differentiate करना, it's poor. The gradation of the intensities are also far less accurate. Okay, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. The ability to transmit rapidly changing or rapidly repetitive signal is also poor because this is all about crude information. Okay, therefore it is evident that the anterolateral system is a cruder type of transmission system. Okay, even so, certain modalities of sensation are transmitted only in this system. These are, for example, pain, temperature, tickle, itch, sexual sensations. यानी हम बार बार कह तो रहे हैं कि ये जो एंटेरोलेटरल सिस्टम है भाई ये बड़ा क्रूड सिस्टम है. डॉर्सल कॉलम मीडियल लिम्बिकस पाथवे इज वेरी फाइन ट्यून सिस्टम, इज वेरी डिस्क्रिमिनेटिव टाइप ऑफ सिस्टम. लेकिन भाई ये एंटेरोलेटरल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पेन, टेम्परेचर, टिकल, सेक्सुअल सेंसेशंस ये सब सिर्फ एंटेरोलेटरल पाथवे से ही गुजरती है. They do not go through dorsal column medial lemniscus pathway at all. Okay, so that pathway is therefore very important. Now, some special aspects of somatosensory function in the thalamus. So I'm not going to go through these at the moment because clinicals. ये actually point मेरा ये है कि यहाँ इन्होंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया है
वो कवर भी नहीं कर रहा सही से न्यूरो एनाटॉमिकल जो डिटेल्स हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स की, और रादर कंफ्यूज कर रहा है आपको. सो रादर देन रीडिंग दीज ब्लू बॉक्सेस आई स्ट्रांगली रेकमेंड गो वॉच माय न्यूरो एनाटॉमी असेंडिंग ट्रैक्ट्स की वीडियोस. मैं लिंक दे देता हूं अपनी न्यूरो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट की. सो प्लेलिस्ट को खोलो, उसमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स की वीडियोस को ढूंढो और जरा इन वीडियोस को देखो यार. सो ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा वो सोमैटिक सेंसेशन का पार्ट 2 है. और उसमें हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे सेंसेशंस ऑफ पेन, हेडेक विच इज वेरी वेरी कॉमन यार, लाइफ में हेडेक बहुत कॉमन है नहीं, एंड थर्मल सेंसेशन. सो इस वक्त हमने यहाँ बात किया है ज्यादातर अबाउट टेक्टाइल सेंसेशंस, टेक्टाइल रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स. सो वी टॉक्ड अबाउट पेन, टच, टेम्परेचर, 2-point डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, और बेसिकली 2 पाथवेज हमने डिस्कस किए हैं विच इज डॉर्सल कॉलम मीडियन लिम्निस्कस पाथवे and anterolateral pathway. So this is what we have discussed in this video. Next video will focus on other types of sensations which are also somatic sensations. So see you in chapter 49 very soon. Take care of yourself. I love you all. Stay blessed and keep watching Dr. Asif lectures.